Hello everyone and welcome to Humanities Adda. This is going to be a demo lecture for the crash course, History Crash Course, Class 12, that I will be beginning in March, basically for your term 2. And in this demo lecture, I will be discussing the chapter Kings and Chronicles, the Mughal Court, 16th to 17th century. So here, first of all, we will look at the time period that is 16th to 17th century. And by 16th century, here we mean the time period beginning from 1500 onwards to 1599, and 17th century is yours beginning from 1600 to 1699. So this is the time frame which we will be dealing in your chapter Kings and Chronicles, and we will be focusing on the term Chronicles. And first of all, let's just a second. Let me give you a little bit of introduction about myself. I have done my graduation in history from Delhi College of Arts and Commerce, Delhi University, and currently I am pursuing masters from Delhi University itself in history only, MA in history. So let us begin with this chapter. So first of all, we are going to deal with this topic, that what are the chronicles, and I'm beginning with the green box that you have on the beginning of the chapter. इंट्रोडक्शन वाला जो पेज है वो हम लोग पहले यहाँ पे देख रहे हैं. तो क्रॉनिकल्स का मतलब क्या है? क्रॉनिकल्स आपके जो एक तरीके से आप देखोगे तो ये डायनेस्टिक हिस्ट्रीज होते थे. These are basically histories which were written during the time period of the kings, or you can say the emperors or rulers. And these histories, they were written in a chronological manner. तो आपको इन histories में एक chronology देखने के लिए मिलेगी, that events are organized in a chronology. That you will find कि जितने भी events हैं उनको chronology में arrange करके लिखा गया है. एंड इनको आप अरबिक पर्शियन टर्म में तारीख भी कहा जाता था. एंड मॉडर्न हिस्टोरियंस जो हैं, आपके यूरोपियन हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने ये जो टर्म है क्रॉनिकल, दे हैव यूज्ड दिस टर्म क्रॉनिकल्स फॉर दीज डायनेस्टिक हिस्ट्रीज. नाउ कोर्ट हिस्टोरियंस जो हैं उनको कमीशन किया जाता था एम्परर के टाइम की हिस्ट्री को लिखने के लिए. फॉर इट यू कैन से कि इट वाज अ काइंड ऑफ पोस्ट, जिस पोस्ट पे एम्परर जो है एक कोर्ट हिस्टोरियन को हायर करेगा. ही विल अपॉइंट अ कोर्ट हिस्टोरियन एंड ही विल से दैट यू आर सपोज टू राइट द हिस्ट्री ऑफ माय टाइम एंड द जो भी इवेंट्स चल रहे हैं. इनफैक्ट ही हैज टू ट्रेस इवन द हिस्ट्री ऑफ हिज एंसेस्टर्स, एंड उसके बाद जो उससे पहले वाले रूलर्स थे उनकी हिस्ट्री को लिखना है. एंड देन उस तरीके से जो करंट एम्परर है जिसने हायर किया है उसकी हिस्ट्री को लिख के ही इज सपोज टू एंड द हिस्ट्री देयर अंटिल जो वहां तक. एंड इन मुगल्स टाइम यू विल सी कि अकबर जो था उसके टाइम से आप देखोगे कि जो कमिश्निंग ऑफ द कोर्ट हिस्टोरियन है, ये ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होता है. बिफोर दैट बाबर हुमायूं के केस में आपको ये कोर्ट हिस्टोरियंस वाला जो ट्रेंड है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा. So several, they used to write their own histories and खुद का जो biography है वो लिखेंगे. And there were other different kind of histories written during we have different sources for the Mughal time period. Okay, and then you can say कि जो ये आपके writers हैं और court historians हैं, ये बहुत vast amount of information जो है collect करते थे different regions से of the subcontinent, because Mughal Empire, if you see, it was a very vast region and of the subcontinent, and this helped. I think in the fourth line there is some mistyping error, typing error है यहाँ पे, sorry. So ये जो writers हैं, ये जो information collect करते थे from the regions of the subcontinent, तो ये किंग्स को एक तरीके से हेल्प करता था, एम्परर को हेल्प करती थी ये इंफॉर्मेशन उनको अपने डोमेन को गवर्न करने में. बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू हैव द इंफॉर्मेशन, यू हैव द डेटा, then you can just govern your domain more efficiently, because you know where
the people are happy, where the people are sad, and what are their grievances. So this is how the governance, it became more efficient because of these writers. Now, second thing that we have, the next topic, is significance of chronicles. Again, I think the chronicles, I have some, I think, like typing error. Anyways, now we have significance of chronicles. So why the chronicles are important? They are dynastic histories, we know, but why are we studying this chapter, and why are we studying about chronicles? They were written. Yes, we know that they are histories, and so they were written during the emperor's time, and they were written by court historians. But सिग्निफिकेंस उनका ये था कि जो मुगल एम्पायर, उस एम्पायर में जो एम्परर हुआ करते थे, जो किंग हुआ करते थे, उनका एक खुद का विजन होता था, दैट दे फॉर इंस्टेंस, लाइक उनका मुगल रूलर्स का विजन ये था कि दे आर अपॉइंटेड बाय द डिवाइन विल टू रूल द हेट्रोजेनस पॉपुलेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इनफैक्ट हर जगह पे ये, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मुगल रूलर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. तो दे वर दे हैड दिस विजन कि दे आर नॉट ओनली अपॉइंटेड टू रूल द Muslim population, but they are appointed to rule the heterogeneous population of the Indian subcontinent, that is the Hindus, Sikhs, and जो भी बाकी आपके ट्राइबल पॉपुलेशन हो गए, रीजनल जो आपके डिफरेंट कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती थी, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, जो छोटे मोटे रिलीजन हो गए. सो इनका ये मानना था कि ये डिवाइन विल के कारण अपॉइंट हुए हैं, डिवाइन विल, गॉड ने इनको अपॉइंट किया है रूल करने के लिए. सो नाउ इसको ट्रांसमिट किस तरीके से करेंगे? दे डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया नहीं है, ट्विटर पे कैंपेन नहीं कर सकते, हैशटैग्स यूज नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक नहीं है, दे डू नॉट हैव दी टेलीविजन, रेडियो, इनफैक्ट दे डोंट इवन हैव दी न्यूज़पेपर, एंड एक तरीके से मास रीडरशिप भी नहीं है कि पीपल विल रीड. एंड तो एक वे था कि ये histories के through, because histories, they knew there is a tradition. Islamic, if you see Arabic lands में history का tradition जो है अरब में, वो already established हो चुका था. Arabic historiography, if you ever if you when you go and study history in the higher levels, then you will know that Arabic historiography, it was already established. So these people, these Muslim rulers, they were well aware of that कि history एक way है, ये ideas को writing history is a way of transmitting these visions, ideas. So इस एक significance इसका ये था. Then अभी present times में if you see कि इसका क्या significance है, तो this is a very important source for the writing of Mughal history. ठीक है, for writing the Mughal history, because we do not have any matlab, we have the dynastic histories as very important source for writing the Mughal history, because हम इसी को refer करके and then we write and then we compare another sources. तो अगर हम compare भी कर रहे हैं तो इन dynastic histories के साथ other secondary sources जो हमारे available हैं, मतलब जो less known sources available है, उनके साथ इसको compare करते हैं. Then you can say कि factual information जो है institutions of Mughal state, for instance, you can talk about the administration, the different kind of ministries, ministers, and the आप बोल सकते हो officials. तो ये सारी चीजें factual information जो है हमें काफी ज्यादा मिल जाती है in chronicles में. एंड जो chronicles हैं ये एक तरीके से कन्वेयर्स की तरह भी इन्होंने एक्ट किया, मुगल रूलर्स जो अपने डोमेन पे जो एक तरीके से मीनिंग्स को इम्पोज करना चाहते थे, वट एवर आइडियाज दे वांटेड टू इम्पोज ऑन दैट डोमेन. सो दीज chronicles, they acted like that. For instance, if you take take the example of Akbar's and his ideologies, सुलह-ए-कुल हो गई, इसकी religious policies जितने भी हो गए, तो वो अपने chronicles में इन चीजों को लिखवाएगा. एंड इनफैक्ट देन यू विल सी कि ये जो है ये chronicles, इसके जो आइडियोलॉजीज है, उन आइडियोलॉजीज को मीनिंग्स को कन्वे करेगा टू हिज डोमेन. एंड the chronicles, they will kind of impose these things on his on the domain of the kings.
डोमेन ऑफ द किंग, एंड लेटर ऑन एक तरीके से एग्जाम्पल भी सेट करता है बाकी के रूलर्स के लिए। एंड ये हमें क्रॉनिकल्स ये भी बताता है कि किस तरीके से इंपीरियल आइडियोलॉजीज जो है वो बनती थी और किस तरीके से उनको स्प्रेड किया जाता था, डिसमिनेट किया जाता था। नाउ वी विल लुक इनटू द मुगल